Is it audible? Yes, you are. Okay. So, good morning to one and all. Today we are here for a session on innovative prototype validation, converting innovation into startup. And for that, we have a guest, engineer Ketki Tupe ma'am. So let me first introduce her. She is a mentor at a startup bootcamp, a very recognized Singapore-based organization uh, with the number one industry focus accelerator in the world for startup. Also, global jury panel, member of Wadhwani Foundation and mentor of Change for Atal Tinkering Lab under Niti Aayog. Also, Government of India. He also serving as a visiting faculty member at MIT World Peace University, Pune. She is reviewed over 800 plus startup ideas in her journey till date, accumulated over 200 hours of mentoring experience. So she is a very renowned speaker, guest in the field of innovation. So may I request to everyone to listen carefully, and if you have any doubt regarding the session, you can free to ask. So let me ask to Ketki ma'am to start over her presentation. Yes, thank you, sir. Thank you for the brief introduction. We'll start with the session. Just do let me know from all of you guys in which language you are comfortable. Means, shall we proceed with English, Hindi, Marathi, English, Minglish, whatever you will prefer to me. Meanwhile, I'm sharing my screen. Just do let me know whether it is visible or not. Is it visible? Is my screen visible to you? Just somebody please respond. No ma'am, no ma'am. Now, No. okay, I'll share once again. Is it visible now? Online participants? No ma'am. Now it is visible. No, no. So, have you given me the access to share the screen? Because I think somebody, you are requested to stop the presenting so that my screen will be visible. Yes. Yeah. Now it is visible. Is it visible now? No ma'am. Okay. Somebody from online participant just cross check it whether it is visible or not, because as per my knowledge, it is visible. Dr. Megha Kadam, can you just unmute the mic and do let me know whether it is visible or not? Or anyone, Shubham, Ganesh, Aditya. Or you may mention it in chat box.
Hello, ma'am. Yes. I just allow to share the screen. So Okay. can you please just share it once again? Okay. Okay. Yes. Now it is visible. Is it visible now? Yes, ma'am. Okay. Okay. Great. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you so much. So we'll start with the session. Meanwhile, you guys just would let me know in which language we can proceed. So let be the session interactive. Not only I'll deliver the session and you guys will listen. So it will not be a fruitful session. So yes, I have planned one activity for you guys also. So just respond me, and in case of any query, you can just unmute the mic or do let me know your question in the chat box. I'll happy to answer this. So welcome. Today we are dealing with a topic: innovation, prototype validation, converting the innovation into startup. So in this case, firstly we will learn the terms like what innovation is, what startup is, how the prototype validation can be done, in that what's the prototype is. So in these 2 hours of session, I'll take one by one these words, and then we will combine the topic and learn that what exactly is expected to do in this, means how we can convert our innovation into the startup. Okay. Yes. Hello, somebody wants to say something? Okay, I'll proceed. So, what you guys will learn today, you'll understand what's the role of innovation in the startup, and also how to launch your startup. Means if you have any kind of idea, any innovative idea you guys having, then how to convert that innovative idea into a startup. This is the main agenda of the today's session, which is expected to you guys learn. And also I'll explore some resources on tools available, uh, with the help of which you can convert your idea into a startup. So yes, let's start with a interactive activity. You guys are just requested to suggest me or tell me that uh, the examples which you are observing in your daily life and you consider it as a innovative, that yes, this is the example in my daily life and I found this is something innovative. It's making my life easier. So anybody, just I'm checking the chat box also. Yeah, good morning, Shubham. Just do let me know. Okay, I'll give you the hint. So see, uh, if we are taking the example of the Amazon, so Amazon is a something innovative platform which makes our life easier, which gives us more options to choose the products, to compare the reviews of the products. So it is something innovative service. One more example if I can give to you, then again the daily life example, big basket is there, blinkit is there, so you're ordering the products on your fingertips and that products get delivered to your doorstep. So it is something innovative. Like if I am giving a delivering a presentation and I want to move a slide, there is a product called laser. So I can move the laser and explain you whatever I want to. So this is something innovative. So can you guys just tell me which ideas or which products comes to your mind? Any innovative product or any innovative service, you can name it. You may use the chat box or you can just unmute the mic and do let me know.
Okay, so meanwhile, you just do let me know. I'll proceed with the slides. So yes, there are the plenty of the examples in our daily life which we can consider it as a innovative products or innovative services. So there is a difference between service and the product. So if I can give the example of the product, so there is a startup which I know. So of course I'll explain what the startup in the further slides, but I'll share their products with you. What are their products? So we all know, if we want use and throw paper plates or paper bowls, then we prefer to use the paper made or plastic made bowls or dishes. But as we all know, it is very dangerous, very hazardous to our environment. So it is not recommended to use that paper and Ma'am, plastic. Yes. your voice is breaking, ma'am. My voice is breaking. Yes, ma'am. Okay, somebody else just confirm. Is it breaking or is it only your issue? I think somebody in chat box responded. No, ma'am, your voice is coming clearly. Okay. So I think whoever is facing the issue is recommended to leave the meeting and join again so that you can get my voice more clearly. Yeah. So I was telling about the startup. So they have identified this problem. That what is the problem? That if we are using the paper or plastic made dishes or bowls, then it is hazardous to the environment, and it is not recommended to eat in plastic, because if we pour some hot thing into the plastic, then it may melt and all the things. So they have given a innovative solution to the world, that they have made the dishwares, they have made the dishes, and they have made the bowls with the help of the rice husk. So rice husk is a waste from the agriculture, and they have made the bowls and dishes with bowls, dishes and spoons with the help of the that rice husk waste. So they are doing the waste management of the rice husk, first thing. And second, you will surprised to know that dishware is eatable. Means you can eat that dishware. You can eat the plate. Once you finish your meal, you can eat that plate also. Like this ice cream cone. Once we finish our ice cream, we eat the cone also. So similarly, they have invented the product. They have innovated that product, and they have made that product as that you can eat it. So there is no residue, no waste generation after the eating, after you consume your meal. So yes, this is something innovative product. And in the case of the service, I'll take the similar problem statement, that we have issue of the plastic waste and paper waste. So there is a startup, it is a Pune based startup again. Their company name is Zeroware Private Limited. So they have started a startup in which they give the rental service of the steel dishware, steel plates, steel spoons, steel cups, steel whatever you want, whatever the dishware or cutlery you want from them. You just need to order it, you just need to tell them. They'll come to your doorstep. They'll provide you the all the dishware. You can use it for your party, for your meal, for your dinner, whatever you want, and just give them as it is, that dishware. You need not to wash it, just give them. They'll wash it in the dishware with the high level of the temperature, so it will be a disinfectant. So there will be no bacteria generation, and it will be a very hygienic dishware and cutlery items to use again. So this is something innovative service they are providing. And firstly, the example of the eatable dishware I told you, so it is a product. So this is the difference between product and service. So there are the many examples in our daily life, like we are using the headphones. So a headphone is a product. And in the case of the service, like we discussed about Amazon, Flipkart, Blinkit, so they all are giving us the service. So it is not just they are giving the product, they're they're managing the whole supply chain for it. So it is a service. So yeah, so the topic for today's session is
converting innovation into startup. So firstly, in this we will learn about the innovation, what the innovation is. And many students or many people confused with the words innovation and the invention. So what is innovation and what is invention, we will learn in this. So see, what is innovation? Innovation is something that new or you are changing the existing product. Means the example, again we'll come back to that example, that eatable dishware. So there was a segment for the dishware. There was a market segment already established with the dishware, having the options of the plastic, paper and steel dishware. But they have they have innovated that dishware category and give some new products to the market. So this is something they have innovated. So this is something they are providing as the alternative to the existing market available options. So this is the innovation. And what the invention is? So invention is if you are establishing a new market segment, if something new you are doing with it, so it is known as the invention. So like if I can give the example, we'll take the example of the Tesla cars. So there was a already market segment with the there was a already market segment with the automobiles. So there is a already established market segment of the automobiles, and Tesla has identified the problem that we are very much dependent on the fossil fuels. We are dependent on the petrol, we are dependent on the diesel. So it's not a good thing to depend on the petrol and diesel. And also petrol and diesel, consumption of the petrol and diesel is creating the pollution. There is a noise pollution in the existing automobiles available in the market. There is a air pollution in the automobiles available in the market. So Tesla identified this problem, and they have given innovative solution of the electric cars, that you we can just take that car and we are just need to charge it again and again, and don't need to feed the petrol or diesel. So this is something innovative they have given. So then what's the invention is? So uh, if you guys know about the industrial revolution, so in the industrial revolution, before the industrial revolution 2.0, there were no electricity. इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं. तो काफी सारे हर्डल्स आते थे डेली लाइफ में फेस करने के लिए. बट when the electricity was invented, so it is invented, it is something new was introduced to the market. It was not there in the market at all. That market segment was also not there. And just give me a minute. Yes, we'll come back to our point. uh, I was telling you the difference about invention and innovation. So in the case of the invention, if it is the complete segment is absent in the market, like when automobiles was invented. Before that, people used to travel with the bullock cart and the horse riding. But in the market, the new concept, the new segment was introduced of the automobiles. So it is something invented, it is something invention is there. And if you are just making changes in the existing product, existing ideas, then we can call it as a innovation. Like Apple's iPhone, we have taken the example of the Tesla, and second is a Apple's iPhone. Phones were already there, but when the Apple innovated the first
iPhone. So in that they have given the features to save the numbers. So you can save the numbers, and other mobile was there was just feature you can dial the number. But Apple gave the additional feature that you can save the numbers also. Second is a Uber. So again, Uber is a innovative platform in which you can order you can share the request for the for the autos or for the cars, and that Uber service will be at your doorstep. Bulbs. So electricity was already there, and we have innovated the bulb. So this is what innovation is. If you are doing something new into the existing market system, it is known as the innovation. In the further slides, it will be more clear to you. So types of the innovation, like I have mentioned earlier. So there can be broadly, if we can classify the innovation, there are the three types of the innovation. So first is a product innovation, like self-driving cars. So it is a product innovation. We have innovated that without driver we can drive the car. So it is a self-driving cars. It is a product innovation. Touch screen is also a product innovation. We are improving the product into the market. Next is a process innovation. So in the case of the online banking, previously it was only offline banking. We need to go to the bank, we need to fill to the form. So it is all the waste of time, we can say. But in nowadays we have the option of the online banking, so it is more convenient to use, so it is more easily accessible to the consumers. So it is process innovation. Process has been innovated. And the most popular word in your in our generation is a 3D printing. So before that there was a 3D printing is also known as additive manufacturing. We are adding the material layer by layer. And second type of the process is alternative to the additive manufacturing is subtractive manufacturing. Like we need to pour the material into the mold, then we need to remove that material, so their finishing is not as much as good as the additive manufacturing finishing is good. So this is something process we have innovated. New process is there, like 3D printing is a new process. There was a manufacturing, there was a product development already in the market, but new process is introduced to the market, that you can also print the material by adding layer by layer into it, and you can 3D print the model. And also you are just need to give the CAD design or the design for your product to that 3D printer, and it will just start the printing. Third type of the innovation is the service innovation. So like I said, I have given the example of the Amazon, Flipkart, Blinkit. So it is this innovation. Service is innovated in this case. So these are the types of the innovation. Now, why innovation matters for the startups? Like we are learning about startup and innovation. So why innovation is matters for the startup? So before that, we will just learn what is startup, what actually startup is, and why this word startup is so if you guys know, budget is announced a few days back, and in that they have given a very good advantage or blessing to the startup ecosystem, is that they have abolished the angel tax. So there is a 0% angel tax now on any investment. So might be these terms are new to you, but meanwhile at the end of the session you will come to know that what exactly it is. So for that we'll just learn what is startup. So yes, I'll read the definition and then I'll explain you in detail what it is. Yeah, anybody wants to say something? If anybody having the doubt, just unmute the mic and do let me know, or else you can just put it into the chat box. I'll answer. Okay. So, startup is an entrepreneurial venture in the early stage of the operation, typically created for the resolving real life problems. So, yes. So, if you are resolving some real life problems, like Ola is resolving the real life problem, Paytm online transaction got easier. So, it is a startup
they are resolving the new life problem with the something innovative solution giving to the market. So स्टार्टअप क्या है ये जानने से पहले स्टार्टअप क्या नहीं है, अगर आपने मुझे पूछा कि स्टार्टअप क्या नहीं है, देन इन सिंपल वन लाइन आई विल टेल यू दैट इफ यू आर नॉट डूइंग अ ट्रेडिंग then you are a startup, then you may be a startup. So what's trading is, you are purchasing the material from some place and you are selling to the customer, like a retailer shop, like a general store. तो जनरल स्टोर वाले क्या करते हैं, जो अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं वो एक जगह पे रखे वो सेल करते हैं कस्टमर्स को, उनके कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को वो सेल करते हैं वो प्रोडक्ट्स. सो वो बस रिटेल कर रहे हैं. इज दे एडिंग सम वैल्यू इनटू दैट प्रोडक्ट? नो, नॉट एट ऑल. वो कुछ भी वैल्यू एडिंग वो प्रोडक्ट में नहीं कर रहे हैं. दे जस्ट आर taking the products from one place and selling to the another by adding their commission into it. So it is known as the traditional business or trading. The term trading is just procuring the things from one place and selling to the another. But what startup is and how startup is different from the trading? So in the case of the startup, you are manufacturing the product, or you are adding some value into that product or service. So you are doing something new, something innovative, like we have learned about the innovation. You are adding the innovation into the startup. So it is known as the you are adding the innovation into your venture, into your business. So it is known as a startup. So in the simplest term, you can just keep in mind, if your business, you know about business now, the most common word. So if you are adding some innovation into your business, then it is known as the startup. Simple. Meanwhile, in the further slides, you will also understand in detail. But for now, just keep in mind, startup is something you are doing new, you are doing innovative. So for understanding, I can give you the more real life example, which I have heard, which I have experienced their startup journey. So there are the baby diapers, or there are the sanitary and maternity pads already in the market, which are made with the hazardous plastic, hazardous chemicals. But there is a startup, Arvind Solutions Private Limited. They are a Jalgaon based startup, and in Jalgaon, you know, there is the huge production of the banana. So there is huge production of the banana, and the banana stem is completely waste material. So farmers used to burn that material. So if they are burning that material is going into the waste, and so it is completely waste for them. And secondly, it is creating the air pollution. If you are burning that material, it is creating a pollution to the environment, and it is very hazardous, it is very toxic, as we all know. So what that two ladies think about this, so we can make some pads keeping banana stem pulp as a core material to absorb. So this is something innovative, this is something they have proposed, an innovative solution to the market. So their business or whatever they are doing is known as a startup, because they are adding some value and they are creating something innovative. Like the simplest example again, if we can take, so there are the products available in the market. There are the cakes and cookies, biscuits available in the market, which are made with the maida and the sugar. So if you went to the any cake shop, you will find the cakes made with the high amount of sugar and high amount of maida into it. And people used to eat it, but it is not a healthier side option, it is not a healthier option for us to consume the maida and the sugar. So there is a Chhatrapati Sambhajinagar based startup, Quick Bites, their brand name is, and they are manufacturing the cakes and cookies made with the whole wheat, ragi, nachni. So these all are the millets, and these all are the beneficial or healthy for the for our health. These are the good things for our health, and they have replaced the sugar with the jaggery. So this is something innovative, this is something that they have given innovative solution to the market. They are not doing the exact process what the other competitors of there is doing. So this is known as the startup. If I can give you the simplest example of it, there is a one more startup.
So why I'm giving so much examples to you guys? Because you should understand what the startup is. If you guys understand what startup is, then only you can able to convert your innovation into the startup, which is the main agenda of our today's topic. So again, there is a Sambhajinagar based startup, Sankalpana Creations Private Limited. So what they are doing, they are they're upcycling the waste wood. So if we decided to do a furniture in our house, and we want to, just take an example, we want to make a table for us. So once we started converting the sheet of the wood into the table, there is lot of wood waste is there. वुड वेस्ट इज जनरेटेड. बहुत स्मॉल टाइनी पीसेस होते हैं वुड के जो कहीं भी काम में नहीं आते हैं, एंड दैट गोज इनटू द स्क्रैप. और जब वो स्क्रैप में जाता है तब उसका यूज कुछ भी नहीं होता, इसको आइदर बर्न किया जाता है या फिर वो वेस्ट मटेरियल होता है. सो दैट लेडी आइडेंटिफाइज द गुड क्वालिटी ऑफ वुड फ्रॉम दिस वेस्ट, एंड जो कावेरी या फिर गोदावरी रिवर है उनके जो किनारे पे जो स्टोन्स मिलते हैं, वो स्टोन्स के भी ऐसे पर्टिकुलर शेप्स वो आइडेंटिफाई करके उससे उन्होंने की स्टैंड मैन्युफैक्चरिंग, पेन स्टैंड बनाते हैं, डेकोरेटिव फ्रेम्स बनाते हैं, फ्रिज मैग्नेट्स बनाते हैं. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर अपसाइक्लिंग द वेस्ट, दे आर अपसाइक्लिंग द स्टोन. जो स्टोन्स वैसे भी वहां पे वेस्ट में पड़े हुए हैं उनको भी वो अपसाइकल कर रही है, साथ ही साथ जो वेस्ट है वुड का उसे भी वो अपसाइकल कर रही है. उससे वेस्ट जनरेशन रिडक्शन में भी हेल्प हो रहा है, और सिमिलरली उसमें अपसाइकलिंग भी हो रही है, दोनों भी, वेस्ट एंड स्टोन की. सो इट इज नोन एज अ स्टार्टअप. Okay, so I think I have given plenty of the examples for the startup. If you guys want more, then just do let me know. I can share multiple examples with you for of the startup. So now why innovation matters in the startup? इनोवेशन क्यों मैटर करता है? अभी अगर हमारे स्टार्टअप में इनोवेटिव हो तो क्या हो जाएगा? जस्ट टेक एन एग्जांपल. इफ देयर आर द मल्टीपल बिजनेस व्हिच आर डूइंग द सेम थिंग, लाइक, हेलो, yes. So we were discussing about the why innovation matters in the startup. So let's take example. There are the multiple, like we will take the example of that cake and cookies manufacturing startup only. So there are the cake manufacturer, there are the cookie manufacturer in the market right now, which are they're making their products from the maida and the sugar. But to stand out from the competition, or the people who are searching for the healthier options, for there is a startup uh, name as the quick bite. So why they are standing out of the competition? Their innovation helps to stand them out of the competition. That if I am a customer and I want something innovative product, or I want something, I don't want to eat the regular cakes and cookies, so there is an option for me of the quick bite that I can buy the products from her, and which is innovative, which is something differentiated from the market. And if I don't want to go with the maida and sugar based cakes, so I have the option. So why innovation matters in the startup? To stand out from the competition. If you want to stand out from the competition, if you want to give something innovative product, then it is known as a then this is why the innovation matters in the startup. First thing. Second is to solve the customers problems. So again, we'll take the same example. There are the people with the diabetics, they don't want to consume sugar, or they are not recommended by the doctors to eat the sugar based products, so it is alternative to them. Third is a driving growth. So
if you want the growth of your startup, and if you want that your startup should succeed or your business should be stand out from the market, and for your growth, innovation is the only way to expand your business. Innovation is the key for every business, every startup to grow, to nurture. So there are the plenty of the real world innovations, and uh, I will not stress into that's it, because I want to firstly tell you guys that how these ideas can spark into your mind, and how you can convert your ideas into the reality or into the startup, into the real life products. So I am pretty much sure that once you take admission in your engineering, then you have come across the various projects. Like you need to do the projects, and for that you need to think that what we can what projects we can make and what can be the theme of it. So अगर आपको कोई भी थीम सोचनी है उसके लिए, तो आप कुछ तो अलग सोचते हैं. Like जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के, लाइक आपको सोलर बेस्ड बैटरी बनाने का आप सोचते हो. सो इट इज समथिंग इनोवेटिव, इट इज समथिंग इनोवेटिव विच यू कैन गिव टू द मार्केट, बिकॉज मार्केट में अभी वो सेगमेंट इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो वो आप दे सकते हो. साथ ही साथ अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं आपको, तो अगेन देयर इज अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ द सेग्रीगेटिंग द कलर बेस्ड, कलर जो भी रहेगा तो कलर के अकॉर्डिंगली सेग्रीगेट होते हैं टोकन्स या फिर कूपन्स. सो वो भी एक प्रोजेक्ट, मोस्ट कॉमन प्रोजेक्ट है. सो इट इज समथिंग इनोवेटिव, इट इज डूइंग समथिंग यू आर एडिंग टेक टू द इट, समथिंग यू आर एडिंग टेक्नोलॉजी टू द योर product or to your service. So where does the idea sparks? Idea sparks through your discussions, through the brainstorming. I'll come to it. Identifying everyday problems and seeking better solutions. Yes, you are just need to open your eyes and see whatever is happening around you, and how you can give a best solution by identifying the problems happening near to you. So I'll again take a pause and I'll again give the example of a startup. So many of you might be outsiders, means you are not from a Pune and you are in the Pune for the education, or there are the many people in the Pune for the job. So they used to have their lunch in the messes. So they have बहुत सारे लोग जो है मेस ज्वाइन करते हैं, एक मेस ज्वाइन करते हैं जिनमें उन्हें सुबह भी जाना है लंच करने के लिए, और शाम में डिनर करने के लिए उन्हें सेम मेस जाना है. सो there is again a छत्रपति संभाजीनगर based startup. They have identified a problem that कि अगर मुझे मेस में खाना खाना है तो मुझे एक ही टाइप के मेस में जाना पड़ रहा है, या मैं एक ही टाइप के मेस में जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे वही टेस्ट रिपीटिवली मिल रही है. सेम टेस्ट इज देयर, नथिंग न्यू इनटू इट, बट मुझे एक ही टाइप के मेस में खाना पसंद नहीं है. Nobody likes कि एक ही टेस्ट, एक ही टाइप का टेस्ट मैं हर रोज खाऊं, या फिर पूरे 1 मंथ में एक ही टाइप का अगर टेस्ट खाऊं तो इट्स समथिंग बोरिंग. सो दैट फाउंडर आइडेंटिफाइड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दैट सो student want the multiple option. Hence he developed a platform named as Khana Anywhere. It is right now available only in the Sambhajinagar city. It is not available in Pune, but they may establish or they may expand there also. So what's the solution is, you have a app, you have a Khana Anywhere app. अगर आपके पास वो ऐप है, आपको वहाँ पे कुछ अमाउंट पे करनी है जिससे आपको कुछ कूपन्स इश्यू हो सकते हैं. वो कूपन्स इश्यू होने के बाद आपके नियर बाय जो भी मेसेस है, आप जिस भी मेस में जब भी जाना चाहो तब आप वो मेस में जा सकते हो और वहां से मील आप ले सकते हो. तो दिस इज फ्रीडम दे हैव गिवन टू देयर कंज्यूमर्स, देयर कस्टमर्स, कि आप अगर आपने हमारे टोकन्स ले लिए तो नियर बाय जो भी मेसेस है, या फिर आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे एग्जाम देने गए हो या फिर किसी और पर्पस गए, तो आपको रिटर्न आपकी ही मेस में खाना खाने की जरूरत नहीं है. आप अगर तब आपका लोकेशन वहां पे ऑन करो आपके मोबाइल फोन का, तब वो ऐप पे आपको जो भी नियर बाय मेस दिखाएगा वो मेस पे आप जाके खाना खा सकते हो. सो दिस इज हाउ दैट पर्सन आइडेंटिफाई एवरीडे प्रॉब्लम. जो मेस के बच्चों के साथ डेली लाइफ में प्रॉब्लम होता था, दे हैव आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम एंड गिव अ बेस्ट सॉल्यूशन टू देम
So this is what need to think while building your startup. Combining the existing ideas in a new ways. There are the plenty of ideas available, so you need to just combine it and give your own way. Observing the trends and unmet needs in the particular market. Yes, this is the most important thing. This is the most common example, that you need to think about what is the unmet need, means ऐसी कौन सी नीड है मार्केट में कि जिस पे अभी तक सॉल्यूशन आया नहीं है. आई विल गिव दैट सॉल्यूशन. इफ द थिंग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट एंड इफ आई एम गिविंग द सेम, देन देयर इज नो डिफरेंशिएटर अमोंग मी. और अगर मेरे पास कुछ डिफरेंशिएटर नहीं है तो मैं मार्केट से स्टैंड आउट नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये जो नीड है ना, ये तो मार्केट में है ही नहीं, या फिर ये जो नीड है ना, ये नीड से तो मार्केट अभी बना ही नहीं है. तो आपको ऐसी नीड आइडेंटिफाई करनी है. सो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच से आपको देखना है. फ्रॉम प्रॉब्लम्स टू प्रोडक्ट्स, प्रॉब्लम से आपको प्रोडक्ट पे आना है, जैसे हमने काफी सारे एग्जांपल्स अभी देखे हैं. पे अटेंशन टू योर ओन फ्रस्ट्रेशंस एंड चैलेंजेस. यस, इफ आपके अगर डेली लाइफ में कुछ फ्रस्ट्रेशंस और चैलेंजेस है, आप उन्हें भी आइडेंटिफाई करके कुछ सोल्यूशन दे सकते हो. टॉक टू फ्रेंड्स, फैमिली एंड पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट देयर पेन पॉइंट्स. तो अगर आपको कोई भी सोल्यूशन आपको क्लिक होता है, या फिर आपको कोई भी इनोवेटिव आइडिया आपके माइंड में आता है कि यस दिस इज समथिंग आई कैन गिव टू द सोसाइटी, बट आपको चेक करना पड़ेगा पहले with your friends, with your family, with your potential customer, that yes ये तो मेरा प्रोडक्ट ले सकता है. लाइक इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ द खाना एनीवेयर, कि मेस में जाने वाले जो बच्चे हैं वो मेरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, वो मेरी सर्विस ले सकते हैं. दैट ऐप दे कैन डाउनलोड एंड दे कैन पे द मनी टू द मी फॉर दैट सर्विस. सो उसमें जो पोटेंशियल कस्टमर है आपके, तो पोटेंशियल कस्टमर से आपको डिस्कस करना पड़ेगा, उनसे आपको चर्चा करनी पड़ेगी ये बात पे कि वेदर यू विल कि आप इसके अगेंस्ट मुझे पैसा देना चाहोगे क्या, या अगर मैंने ऐसी सर्विस मार्केट में एस्टैब्लिश कर दी देन विल यू पे मी. So these questions you need to ask to your customers. So here I take a pause and I'll explain you the difference about consumer and customer. So what is the difference between consumer and customer? And I'll ask one simplest question to you also. So take an example of a baby skincare products. So baby skincare products जो है वो use कौन करने वाला है? Anybody? You can just unmute the mic or put your answer in the chat box. ओके, सो बेबीज जो है वो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले हैं. सो द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग योर प्रोडक्ट इज नोन एज अ कंज्यूमर, कि वो मेरा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, सो ही और शी इज माय कंज्यूमर. बट हु इज कस्टमर? कस्टमर इज अ पर्सन हु पे यू अगेंस्ट योर प्रोडक्ट और सर्विस. आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लेने के अगेंस्ट आपको जो पे करने वाला है. सो इन द केस ऑफ द बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी इज नॉट आर नॉट गोइंग टू पे यू फॉर योर प्रोडक्ट्स, बिकॉज बेबीज आर द कंज्यूमर्स. बट आपको पे कौन करने वाला है? बेबीज के लिए आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हो उसके अगेंस्ट आपको पे उनके पेरेंट्स करने वाले हैं. सो आपके जो कस्टमर है, द पर्सन हु विल पे अगेंस्ट योर प्रोडक्ट और सर्विस, that persons are the parents. So parents है आपके customers और आपके consumers कौन है? The babies who will consume your product, who will use your product, they are your consumers. So this is the difference between customer and consumer. You guys must be aware while proposing a solution to, and you need to take care about both of them. You need to take care about customers requirements also, and you need to give best to the consumer also. रिसर्च करंट ट्रेंड्स एंड इंडस्ट्री चैलेंजेस. यस, सो करंटली इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस है? करंटली कोई भी आप अगर गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम उठा लो, या फिर देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट. सो डिफेंस जो है उसमें भी काफी सारे दिक्कतें हैं, काफी सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है विच दे आर फेसिंग. सो आईडेक्स इज अ मिनिस्ट्री. सो आईडेक्स इज अ नेम ऑफ द स्कीम, और वो हर
साल कुछ मंथ्स के गैप में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उनके रिलीज करते हैं. लाइक इफ आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ देयर लेटेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच they have announced, and they have requested to the us that if we can give a innovative solution, or if we can give the solution to them for their problem statement, then they are going to pay us, then they'll give us the money whatever we require, and we just need to give them the product or the service which they are looking for. सो उसमें जो उन्होंने लेटेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक दिया था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी. सो जो हमारे आर्मी की फोर्स है, तो उन्हें जब भी हमारे एनिमी के साथ फाइट करना है, तो जो वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो बहुत डेंजरस रहते हैं, वो बहुत अलग रहते हैं, और उसमें ट्रैवल करना या फिर उससे जाना डिफिकल्ट होता है. लाइक इफ देयर इज अ मडी रीजन अगर है, काफी सारा मड वहां पे है, तो जो आर्म फोर्सेस है उसको वो क्रॉस करने में काफी सारी दिक्कतें आती है. साथ ही साथ जब भी वो क्रॉस करते हैं तब उनके काफी सारा टाइम और एनर्जी भी उसमें वेस्ट होती है जस्ट टू ट्रैवल दैट मडी रीजन. सो दे हैव आस्क्ड टू गिव अ इनोवेटिव सॉल्यूशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट टू देम. तो क्या यूज किया जाए ऐसे रीजन में कि जिससे वो ट्रैवल कर सके. तो उसके लिए एक स्टार्टअप है जिन्होंने सॉल्यूशन दिया कि दे कैन मैन्युफैक्चर अ बोट विच इज अ इलेक्ट्रिक बोट. तो जो अगर पेट्रोल या डीजल बेस्ड अगर वो बोट दी जाए, तो फिर इन दिस काइंड ऑफ द सिनेरियो कि अगर एनवायरमेंट की ना सब हर्डल्स है, तो उसमें पेट्रोल और डीजल कहाँ से लाएंगे. सो दे हैव गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक बोट कि जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो, आप बैटरी स्वाइप भी कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, एंड देन यू कैन ट्रैवल इन द मडी रीजन ऑल्सो. सो दिस इज समथिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन दैट स्टार्टअप हैज गिवन टू द गवर्नमेंट. Now our next slide is talking about creative problem solving process. So how you can identify a problem, or how you can generate an idea from them, and how you can propose a solution. So see, जैसे कि हमने अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आपको पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके डेली लाइफ में, या फिर इंडस्ट्री में, या फिर आपके नियर बाय रीजन में, कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जिस पे आप सॉल्यूशन दे सकते हो. सो फर्स्टली यू नीड टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम कि ये मेरा प्रॉब्लम है. जैसे कि ये जो स्टार्टअप्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, काफी सारे स्टार्टअप्स के मैंने एग्जांपल दिया, तो उन्होंने जैसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके एक आइडिया फाइंड किया कि यस दिस इज समथिंग आई कैन गिव. यू नीड टू थिंक अबाउट द आइडिया एंड पॉसिबल लीड्स कि क्या पॉसिबल है, क्या फिजिबल सॉल्यूशन मैं दे सकता हूँ. So firstly, you need to identify a problem, then you need to generate the idea, and then you should try to find the solution कि what solution you can give. And जो भी आप solution के बारे में सोचेंगे, you need to verify it with the tentative solutions or the alternatives available in the market. कि उन्होंने अगर वैसा दिया है तो वो छोड़ के मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ कि जिससे मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग हो जाएगी, जिससे मुझे एडवांटेज मिलेगा, जिससे कस्टमर्स मेरे पास आएंगे. सो यू नीड टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन आफ्टर थिंकिंग अबाउट योर आइडिया एंड आफ्टर फाइंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो दिस इज अ साइकिल, creative problem solving process. That situation, then explore the vision, then formulate the challenge, explore that idea, formulate a solution, explore the acceptance. Yes, so acceptance is what, कि जैसे मैंने कहा कि आप अगर कोई भी आइडिया के बारे में सोचते हो, सॉल्यूशन भी आपको मिल गया है कि यस दिस इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दिस इज द सॉल्यूशन व्हिच आई कैन गिव, एंड आई हैव द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर दैट सॉल्यूशन. तो उसके बाद यू नीड टू चेक विथ योर कंज्यूमर एंड कस्टमर. आपको आपके कस्टमर के साथ बात करनी होगी. आपको एक गूगल फॉर्म का सर्वे ऑल्सो यू कैन टेक, सो इट विल बी मोर इजियर टू एनालाइज द थिंग्स, इट विल बी मोर इजियर टू चेक वेदर इट इज फिजिबल और नॉट. तो आप जब भी आपका एक सोल्यूशन आपके दिमाग में आएगा कि यस आई वांट टू डू दिस, यू नीड टू चेक विथ योर कस्टमर्स कि क्या वो ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे. Whether there is a product acceptance from your customer or not, you need to check that and then formulate a plan. तब आप एक प्लान बना के आपका जो इनोवेशन है वो स्टार्टअप में
कन्वर्ट कर सकते हो. सो देयर इज अ प्रोसेस फॉर दिस इनोवेशन, कि जो भी मैंने अब तक आपको बताया वो ही मैंने एक स्लाइड में समराइज किया है. व्हाट इट इज कि firstly you need to identify a opportunity. The first is a opportunity. We can अब तक जैसे हम problem statement कह रहे थे, so problem statement is something opportunity to you guys, कि जिससे आप एक आपका solution market में देके आप खुद का startup या फिर आप खुद का venture establish कर सकते हो. So first is you need to identify a problem, you need to seek opportunity into it, then you need to develop a concept. आपको एक concept develop करना है, आपको एक idea develop करनी है, एक solution आपको देना है, जिसको आपको validate करके लेना है, जिसको आपका वैलिडेशन आपको उसका करना है. कहाँ से आप उसका वैलिडेशन कर सकते हो? यू कैन वैलिडेट इट फ्रॉम अ लैब्स आर देयर आर वेरियस लैब्स. यू कैन वैलिडेट इट फ्रॉम अ कस्टमर से भी आप वैलिडेट कर सकते हो कि वेदर दे आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस और नॉट. एंड थर्ड थिंग, यू कैन जस्ट चेक विद द फिजिबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि अगर आपने जो भी सोचा है वो फिजिबल हो सकता है कि नहीं. तो अभी तक तो मैंने आपको काफी सारे सक्सेसफुल या फिर अच्छे स्टार्टअप्स का एग्जांपल दिया. आई विल गिव यू द एग्जांपल कि जिसमें जो इनोवेटर था, तो वो इनोवेटर ने ऐसा सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया था विच इज नॉट फिजिबल विद द वे ही वाज थिंकिंग. सो एक इनोवेटर था. Innovator is a person who innovates or thinks about giving something new solution, और कुछ तो innovative solution उनके mind में है, so उसे हम innovator कहते हैं. He comes to me and he told me about his idea. तो उसका idea क्या था कि मैम I want to manufacture a drone. एक drone मुझे बनाना है. That drone will pick up the people from the fiery area. लाइक अगर कोई बिल्डिंग में फायर होता है या फिर किसी हाउस में फायरिंग की सिचुएशन होती है, तो उसमें दैट ड्रोन विल गो टू दैट बिल्डिंग, गो टू दैट हाउस एंड पिक अप द पीपल आउट ऑफ द डेंजर. सो this is what his problem statement. He have identified a very right statement कि अगर कोई फायरिंग की सिचुएशन होती है तो that we don't have any option, और कुछ ऑप्शन भी हमारे पास नहीं रहता और वो सिचुएशन भी बहुत डेंजरस रहती है. तो अगर उसमें कुछ सॉल्यूशन मिल जाए then it will be a good thing. ऐसा उसने सोचा. Yes, problem statement was absolutely right, but the solution which he was giving, that he wants to manufacture a drone and he wants to manufacture that drone within 1 to 2 lakhs. So it is not at all feasible. वो possible है कब? In future में भी it is possible कि ऐसे भी drones बनेंगे जो इतने प्राइस में मिलेंगे और which will do the same thing which he was thinking about. So वैसा solution market में आ सकता है, but अभी आ सकता है क्या? नहीं. उससे आ सकता है क्या? Some might researchers or scientists might think of this solution or they may give, but उसके जो भी नॉलेज था या उसका जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस थे उससे वो नहीं बना सकता था. सो फॉर दिस यू नीड टू वैलिडेट योर आइडिया. सो आइडिया वैलिडेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन दिस इंडस्ट्री. और अगर आपको सिंपलेस्ट वे इफ आई कैन टेल टू यू कि अगर आपके कॉलेज में आई डोंट नो कि इनोवेशन सेंटर माइट बी हर कॉलेज में होता ही है. यू कैन टॉक टू योर फैकल्टी एंड जस्ट चेक कि जो आपकी इनोवेशन सेंटर या फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप सेल है वहां पे जाके आप कन्वे कर सकते हो आपके आइडिया, और उसके बाद वो आपको बता सकते हैं कि वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट, वेदर दिस इज फिजिबल और नॉट. अगर वो स्टूडेंट ने मेरे पास आके उसका आइडिया वैलिडेट नहीं करवाया था, देन वो उस पर रिसर्च करता रहता था एंड ही विल एंड अप विद द नथिंग. कुछ भी उसके हाथ में नहीं आता था. सो बिफोर दैट he has identified a problem statement, then he seek opportunity into it, he developed a concept of a drone, then he validate the idea. उसने उसकी idea validate करवाई. That's why he come to know कि no, this is not going to work. Similarly, there are the startups जब वो उनकी idea validate करते हैं, when they talk to their mentor or when they talk to the customers, people take a survey or take a lab checking of their whatever the concept they have developed. So तब उन्हें पता चलता है कि whether it will feasible or not, whether they are going to manufacture it or not, और ये solution market में चलेगा कि नहीं चलेगा. So for that purpose, validation is a really very important stage for any startup, for any innovator. Then
अगर आपकी आइडिया वैलिडेट होती है, एक मेंटर से वैलिडेट होती है, कस्टमर से वैलिडेट होती है, आपका प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस हो सकता है, ये आपको एक बार वैलिडेट हो जाए, उसके बाद यू कैन डेवलप अ प्रोडक्ट, उसके बाद यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग योर प्रोडक्ट इन द फिजिकल वे। तब आपके जो एफर्ट्स है वो अच्छे डायरेक्शन में लगेंगे, तब आपको एक क्लियरिटी भी आ जाएगा कि हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप दैट प्रोडक्ट, एंड जो भी आपको फीडबैक्स मिलेंगे, द फीडबैक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपको फीडबैक्स मिलेंगे मेंटर से, कस्टमर से, किसी और पर्सन से, टू डेवलप दैट प्रोडक्ट, सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू व्हाइल डेवलपिंग योर प्रोडक्ट। सो अगर आपका जो डेवलपिंग का प्रोसेस है वो कुछ 3 months का होगा, तो through that this inputs and through this validation, that product may be developed into 1 month. So this is what the importance of the validation stage of the startup. Once you develop your product, you can deploy that product into market. Deployment means you can launch that product into the market, or to whomsoever that product is needed, you can serve that product, you can give that product to them. So this is what innovation process is: to convert your idea into startup opportunity, to concept, then validate, develop, and deploy the product. So next is a design a concept. Of course, you need to design that concept, and then I have mentioned about various idea generation technique, that how you can generate your idea. So we'll quickly discuss that idea generation technique. Then I'll take a pause to answer your question, and then I'll again explain. I'll take a case study of a startup, and I'll explain in detail that what things you need to keep in mind while developing your startup. And also I'll talk about the prototype validation. Prototype, what is prototype? About that also I'll talk in the upcoming slides. So what are the idea generation techniques? अगर आपको आइडिया जनरेट करनी है तो आप कैसे आइडिया जनरेट कर सकते हो? एक तो रिवर्स थिंकिंग. रिवर्स थिंकिंग इज ये सॉल्यूशन है, इसके पीछे जाके सपोज आई हैव द प्रोडक्ट विच आर द केक्स. सो मैदा और शुगर से वो जो प्रोडक्ट्स बने हैं, केक और कुकीज बने हैं, मैं उसके रिवर्स में थिंक करूंगी कि क्या उसका स्टार्टिंग है, तो ये उसके प्रोडक्ट्स है. सो ओके, आई विल रिप्लेस दैट प्रोडक्ट और उससे मैं मेरा एक नया सॉल्यूशन दूंगी. सो दिस इज समथिंग reverse thinking. Then similarly there is a mind mapping technique. Role playing technique is there. So what is role playing? Role playing means कि अगर आप खुद को वो कस्टमर या कंज्यूमर की जगह अज्यूम करके कि आई एम द कस्टमर, और ask somebody to ask you the questions, और आप रोल प्ले करेंगे वो कस्टमर का, to check whether whatever the solution or whatever the problem you are feeling, whether the same problem is felt by that customer or not. So for that, role playing is also a technique. Brainstorming is again a technique. Brainstorming means the group of the people, means अगर आपके friends है, आपको सबको साथ में मिलके एक startup या फिर एक innovative idea सोचना है, then you can just sit together and start a brainstorming, that somebody will tell about an idea and somebody other will tell about another idea. You can combine that, or you may add the things into it, subtract the things into it. So this is what brainstorming is. Next is the 5 W's. So this is the most common कि 5 W जो हमारे होते हैं कि what is going to, what the solution you are going to do, when you are going to do, for whom you are going to do, where you will deploy it, and why the customer should buy your product, and how you are going to do it. So this is also one of the method for the idea generation. सो व्हाई वैलिडेट योर आइडिया, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आपके आइडिया वैलिडेट क्यों करनी चाहिए, बिकॉज टू रिस्क, उसके काफी अच्छे रीजंस मैंने यहाँ पे प्लेस किए हैं. जस्ट यू कैन गो थ्रू इट कि आपके फेल्योर के रिस्क कम हो जाती है. आप एक बार आपकी आइडिया वैलिडेट करवा के लेते हो कहाँ से, तो आपको पहले से पता चलता है कि इसमें क्या हर्डल्स आ सकते हैं, कैसे मुझे इसको टैकल करना है. सो आपके रिस्क ऑफ फेल्योर कम हो जाता है. Helps to refine your idea based on customer feedback. कस्टमर का जैसा भी फीडबैक रहता है उसके अकॉर्डिंगली you can refine your idea. Last but not least, you can save the time and resources. जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि if आपकी आइडिया अगर 2 मंथ्स में आपका प्रोडक्ट डेवलप होने वाला है, तो वो एक ही मंथ में हो जाएगा. इट विल सेव योर टाइम, इट विल सेव द रिसोर्सेस. आप जो भी मटेरियल उसके लिए यूज करेंगे, जो भी रॉ मटेरियल उसके लिए यूज करेंगे, वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, मनी भी वेस्ट नहीं जाएगा और टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा. सो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ द
importance of the idea validation. Idea validation techniques की जैसे मैंने सेम आपको बताया था, I have just put it into a slide कि just for you can read it and remember it or maybe note down these things कि कस्टमर के आप इंटरव्यू ले सकते हो, आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो, सर्वेज एंड क्वेश्चनरीज, यस यू कैन टेक अ सर्वे, यू कैन आस्क देम अगर आपके कोई डिजाइन आप एक क्वेश्चनरी बनाते हो, एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाते हो और वो अगर आप कस्टमर को पूछते हो, आपके वेंडर्स जो आपके रहने वाले उन्हें पूछते हो, देन इट विल बी अ ग्रेट टेक्निक टू वैलिडेट योर आइडिया. So I'll take a pause here. I want to understand कि आपको अभी तक इसमें से क्या क्या समझा है, and if you having any questions do let me know so that I can take the discussion further in terms of the what are the stages of the startup and all the things. So इसके आगे जो सेशन रहेगा वो completely based on the previous जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसके बेसिस पे रहेगा. So that's why I just want to know if any questions you guys are having. Yes, so you may put your question in chat box or you can just unmute the mic and do let me know. No. Okay. So meanwhile, if anybody having any question, do let me know in the chat box. So assuming that you guys are well known about whatever the things I have taught earlier, I'm taking the discussion forward to the different phases of the startup. So ठीक है, हमारा अभी एक आइडिया डन हुआ कि ये आइडिया पे हमें काम करना है, बट फ्रॉम दैट आइडिया जनरेशन to the final execution of the idea and to start the revenue from that idea, what are the stages of the startup which you guys are supposed to know? So there are the different phases of the startup. So first is a basic research. You need to do a so this is a graph, as you are all are the engineers and you guys are very used to with the graphs, so I have prepared a graph for it, that there are the various stages of the startups and we are taking the stages of the startups with respect to the funding and development. Like एक जो question mind में आता है कि who will fund me? Okay, I have an idea but I don't have that much of money, then who will fund me in my every stage? मेरे हर एक stage में मुझे कौन funding दे सकता है? So for that this is a graph which represents the funding versus the your development stage. So in the development stage, firstly you need to do a basic research. कोई भी idea आपके mind में है, you need to do a basic research for it, then applied research. So what is the difference between basic and applied research? If like you have a first year department known as applied science. So applied science is different from you have learned the science till the date. So usko aap apply kaise karoge? It is something like that. So similarly, after your basic research, we need to do a applied research, that how you are going to apply this. This is what you need to search. And for first both the things, it will not need much amount of money and till the business plan or whatever the things you will prepare to develop your product. So the stage 3 के लिए, if you guys are able to see here, that stage 3 के लिए आपको founder means a person who starts the startup or who begins with the startup. So he or she is known as a founder. So founder आपकी जो टीम है, friends family है, उससे आप ये stage तक पहुंच सकते हो against the funding, against your development. So firstly you need to do a basic research, then apply that research. Third thing is a POC, which is proof of concept and target market business plan. So जब आपका एक research हो जाए, then you will plan for a business plan कि आपका business plan कैसे रहेगा. Like उसमें आप production कैसे करोगे, marketing कैसे की जाएगी, organizational plan, it is a part of a business plan. So what is organization plan? कि आपकी टीम कैसी रहेगी, टीम में hierarchy क्या रहेगी, who will report to whom, कौन क्या काम करेगा,
So suppose you are a CEO of your business. So what things you are going to take care about? There is a CTO. So what technical things he is going to manage? There is a CMO, Chief Marketing Officer. So what the things that marketing officer is going to deal about? What the numbers and figures of the sales which he will come to you, that this is what the projected sale is. So these all things comes under the बिजनेस प्लान. सो एट द अर्लियर स्टेज कि अगर आप ऐसे बोलोगे कि अभी मेरे माइंड में कुछ आइडिया है, आई हैव वैलिडेटेड दिस आइडिया, दिस आइडिया कैन वर्क, यस, बट तो अभी मैंने ये सब प्लान्स बनाने हैं, नो, बट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट यू नीड टू थिंक अराउंड दिस बिजनेस प्लान कि प्रोडक्शन कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगा. बिफोर डेवलपिंग एक्चुअल प्रोटोटाइप यू मस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग्स एंड यू मस्ट स्टडी दिस थिंग्स कि कैसे उसकी मार्केटिंग होगी, कैसे उसका सेल होगा, कैसे उसका प्रोडक्शन होगा, कौन सी टाइप की टीम मुझे लगेगी, मेरी टीम कॉम्प्लीमेंट्री कैसी रहनी चाहिए. सो फॉर ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू थिंक इन दिस स्टेज ओनली. आपके प्रोटोटाइप के पहले ही आपको इसके बारे में सोचना है कि ये चीजें कैसे होगी या ये चीजें मैं कैसे कर सकता हूँ. बिकॉज आफ्टर द प्रोटोटाइप या फिर आफ्टर योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके बाद आप ये सारी चीजें अगर सोचने को बैठोगे, देन यू विल नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम. तब उतना टाइम भी नहीं रहेगा, तब आपके प्रोडक्ट्स भी रेडी रहेंगे, देन यू विल जस्ट गो कि जैसे कुछ बिना डायरेक्शन के आप चले जाओगे आपकी स्टार्टअप जर्नी में. सो इट इज नॉट अ रिकमेंडेड आइडिया और इट इज नॉट अ फ्रूटफुल वे to start your startup journey. So before that only you need to check with your target market, who will be your target customer, and you need to just be ready with your rough business plan, I can say. Then the stage of the working prototype come. Now here I will explain what the prototype is. See, if I want to build a let's say any innovative product, like I want to make a headphone. So अगर मुझे headphones बनाने हैं तो उसमें मुझे मेरा जो headphone है how it will look 3D मैंने तो मैंने देख लिया कि 3D में वो ऐसा दिखेगा with respect to x, y and z axis, but अगर मैं उसे हाथ में लेना चाहूँ तो वो कैसे दिखेगा, how it will look. So for that, in the earlier days, people were used to make their prototype with the help of the wood or clay, because there were no or else subtractive manufacturing like I mentioned कि एक मोल्ड बनाना है फिर उसमें. बट अभी जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेंड है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, इट इज 3D प्रिंटिंग. सो 3D प्रिंटिंग से अगर आप जो भी एक मटेरियल लेके आप जो भी एक प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोटोटाइप बनाते हो, जो आपको हाथ में लेके आप देख सकते हो कि यस दिस इज व्हाट आई हैव थिंक्ड अबाउट, और दिस इज व्हाट समथिंग कि ऐसा मेरा प्रोडक्ट दिखेगा. सो इट इज नोन एज अ प्रोटोटाइप. ओके, सो आप लोग जो भी आपके प्रोजेक्ट में बनाते हो, यू कैन कॉल इट एज अ प्रोटोटाइप. सो इट इज अ प्रोटोटाइप. और इफ इट इज अ वर्किंग प्रोटोटाइप मीन्स जो भी आप फीचर्स उसमें देना चाहते हो वो अगर उसमें है, लाइक अगर आप फोन मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो फोन का जब अर्लियर डेज में जब फोन पहले मैन्युफैक्चर हुआ था तब उसकी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मीन्स व्हाट कि एटलीस्ट जो भी थिंग आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप अगर मोबाइल फोन ऑफर कर रहे हो तो उसमें कॉलिंग इज अ बेसिक पर्पस. तो आपके जो MVP है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, तो उसमें कम से कम कॉलिंग का तो भी ऑप्शन होना चाहिए. सो व्हाट इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट? सो इसमें आपका जो भी प्रोडक्ट है उसमें मिनिमम जो थिंग उसने करनी चाहिए, तो वी कैन कॉल इट एज अ MVP. लाइक जो हमने पहले एग्जांपल लिया था खाना एनीवेयर स्टार्टअप का, तो उसमें उनका क्या था कि मेस में जाके कोई भी मेस में जाके आप मील ले सकते हो. तो उसका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है कि ठीक है, एडिशनल फीचर्स क्या है फिर उसमें कि कौन सी मेस में मुझे वेज ऑप्शन मिलेगा, कौन सी मेस में मुझे नॉन वेज का ऑप्शन मिलेगा, कौन सी मेस कब बंद होगी, कौन सी मेस कब चालू रहेगी. सो ये एड ऑन थिंग्स है, दीज आर द एड ऑन फीचर्स. बेसिक उसने क्या करना चाहिए कि मैंने अगर मेरा डेटा चालू किया उसके बाद दैट ऐप मस्ट शो मी what are the nearby messes around me where I can go and take my meal. So it is the minimum feature which that
startup should offer. So it is known as a minimum viable product. So minimum जो things आपके startup ने देने चाहिए उसे आप कहते हो कि minimum viable product. And for this minimum viable product or the for working prototype, so see, I'll tell you, in the today's era there are the various schemes for the startups. Means इतने schemes है कि उतने startups भी नहीं है कि वो उतने schemes को avail कर पाए. But the thing is, तब भी स्टार्टअप्स का कहना रहता है कि उनके पास फंडिंग नहीं है. फंडिंग क्यों नहीं है? क्योंकि आप उस तरीके से उसे अप्लाई नहीं करते हो, आप उस तरीके से इनोवेटिव सॉल्यूशन के बारे में सोचते नहीं हो. सो दैट्स व्हाई यू माइट हर्ट कि कोई अगर आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में स्टार्टअप का कोई आइडिया दे आर थिंकिंग अबाउट इट, सो दे आर कंप्लेनिंग कि फंडिंग नहीं है. फंडिंग क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर नॉट proposing your solution in that way, and you don't have that much of innovation in your startup. So these can be the basic reasons. So अगर आपके वर्किंग प्रोटोटाइप भी अच्छा है तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफी सारे ग्रांट्स का फंड रहता है. इवन कॉलेजेस में भी R&D के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट कुछ फंड्स रिजर्व रखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए. सिमिलरली देयर आर द स्कीम्स इन द मार्केट कि जिसमें आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो प्रोटोटाइप के फंड्स मिल सकता है, ग्रांट मिल सकता है. सो ग्रांट इज समथिंग कि आपको वो पैसा मिल जाएगा एंड यू नीड नॉट टू रिटर्न दैट मनी. ग्रांट छोड़ के भी डेट और डिबेंचर से भी कुछ फंड्स रहते हैं, बट इट इज नॉट आवर कोर agenda of today's session. We may take this discussion later. So there are the many things कि और भी बहुत सारी डिटेल चीजें हैं स्टार्टअप के लिए, but if we get opportunity to arrange one more session on it, और अगर in future हम कोई session arrange करते हैं, then I'll take this topic in detail. So for this stage, just keep in mind कि grant is a fund कि आपको वो दिया जाता है, you are not supposed to return it, कि आपको वो पैसे रिटर्न नहीं करना है. Then incubator funding. So here जब आपका एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, आपका एक ऐसा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है कि यस मिनिमम these services can be given by that product. So तब incubator can fund you. Incubator अब क्या है? So there are the बहुत सारे incubator वर्ल्ड वाइड है. आपके भी सिटी में, आपके भी पुणे, यू आर इन द पुणे. सो पुणे इज अ स्टार्टअप हब. बैंगलोर के बाद और हैदराबाद के बाद अगर नंबर आता है तो पुणे मुंबई का ही आता है, कि जिसमें काफी सारे इंक्यूबेटर्स आपके पास है. सो इंक्यूबेटर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया आती है, इफ यू हैव एनी आइडिया एंड यू वांट टू वैलिडेट दैट आइडिया, देन यू कैन गो टू द इंक्यूबेशन सेंटर. सो इंक्यूबेशन सेंटर व्हाट दे डू, दे कैन गिव यू द मेंटरिंग. सो आपके आइडिया को आपको आगे कैसे लेके जाना है उसके लिए जो मेंटरिंग का करने का काम होता है, दैट्स द रोल ऑफ द इंक्यूबेटर. फर्स्ट थिंग. सेकंड, दे कैन गिव यू द नेटवर्क एंड मार्केट कनेक्शंस. मींस आपकी आइडिया में आपको कोई भी काम करवा के लेना है, CNC चाहिए, सरफेस फिनिश चेक करना है, वॉट एवर थिंग्स यू वांट टू डू. सो उनसे एसोसिएटेड, उनसे उनके जो कनेक्शन में लैब्स रहते हैं, यू कैन गो देयर, यू कैन डू वॉट एवर द थिंग्स यू वांट टू डू. So this is what incubation center can facilitate you. And that incubation center can give you the funding also. They have their own funds, so आपको वो funding भी दे सकते हैं once you reach to the MVP, minimum viable product. But there are other schemes. Many schemes are there which can fund you in your ideation stage only. But again, it depends on the what type of innovation you are doing. If you are working on a blockchain, AI, and something very deep tech, then you have possibility to get the fund in this prototype stage also, or in this once you develop your idea, you are at ideation stage also, then in that stage also some startups get funding because their idea is of that level. Next is the product introduction. So अभी आपका एक minimum viable product ready है कि that product is offering minimum features. उसके बाद आप एक प्रोडक्ट बनाते हो. एक्चुअली यू हैव इंट्रोड्यूस्ड वन प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, योर प्रोडक्ट इज रेडी टू सेल and customers can buy that product. So it is a product introduction stage, product development stage, product ready stage. So in that stage, angel investor. So angel investor he's a person who can invest in your business by giving some money and taking equity in your
startup. So again, this is not main agenda for today's session, so I'll just give you the hint कि if you guys are watching Shark Tank India, so उसमें जो भी होता है ना, उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शार्क्स है वो इन्वेस्टर है एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन योर प्रोडक्ट. सो इट इज नोन एज अ इन्वेस्टर. बट एंजल इन्वेस्टर इज कि आपके अर्ली स्टेज में, कि आपका अभी तक प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं हुआ है, एंड देन ऑल्सो दैट इन्वेस्टर इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट, देन इट इज नोन एज अ एंजल इन्वेस्टर. Next is a venture capital. So venture capital, again, they do the same thing. They take equity in your startup and they can give you the funds. So pre-revenue is what stage? कि अभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है और कुछ अमाउंट में आपका ट्रांजेक्शन भी चल रहे हैं, कि थाउजेंड्स में आपको रेवेन्यू आ रहा है, कुछ 1 लाख तक आपका रेवेन्यू है, काफी कम रेवेन्यू है. सो यू कैन कॉल इट एज अ प्री रेवेन्यू स्टार्टअप. प्री रेवेन्यू समथिंग कि रेवेन्यू के पहले. रेवेन्यू स्टेज है कि आपको अच्छा खासा आपका रेवेन्यू अभी चल रहा है, 50 लाख से 60 लाख से. सो इट इज अ रेवेन्यू स्टेज, इट इज अ स्केल अप स्टेज फॉर योर स्टार्टअप. बट उसके पहले अगर आपका कुछ रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, देन यू कैन कॉल इट एज अ प्री रेवेन्यू स्टेज. एंड दैट वंस यू आर वेरी गुड अबाउट योर प्रोडक्ट एंड आपका प्रोडक्ट भी काफी अच्छे से रेडी है, आपका मार्केट सेगमेंट भी एस्टैब्लिश्ड है, कस्टमर्स भी आपके रेडी है टू बाय यू अगेंस्ट योर, टू गिव यू द मनी अगेंस्ट योर प्रोडक्ट और सर्विस. सो अभी आप एक अगर अच्छे खासे स्टेज में हो, सो यू कैन कॉल इट एज अ रेवेन्यू स्टेज और स्केल अप स्टेज. एंड इन दैट प्राइवेट इक्विटी प्रोडक्ट फाइनेंसिंग may be there and you can raise the funds from that. So I have divided again this phases into 3 phases. That search phase, you are searching only, so it is a search phase. In this stage, from prototype to pre-revenue, it is a building phase. You are building it. And grown is a, now it is a your startup is grown and it is a sustainable, self-established, so we can call it as a grow stage. Here also I just want to check with you guys, if you guys having any problem, any difficulty, any query, just do let me ask. Now we will take into the discussion the legal definition, that there is a department for promotion of industry and internal trade, DPIIT department we can call it as. So DPIIT is a department who takes care about the startups, recognize it. If you want to recognize your startup as a startup, then government can give you the certificate of a DPIIT certification. If you having a DPIIT certification, then you are considered as a startup. So abhi aapke paas kabhi bhi koi there is a person and who is working on the startup. So if you want to check whether their startup is a really startup or not, so you can just ask him or her that whether you have a DPIIT certification. If they have, then it is a startup. If they don't, then it is not. But agar aapka certificate nahi hai, but you have a good idea, so you can apply for that DPIIT certification. So there are the criteria to recognize your startup as a startup. उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पैरामीटर्स है. सो व्हाट आर द क्राइटेरिया एंड पैरामीटर्स? आई हैव मेंशन्ड द लेटेस्ट डेफिनेशन announced by the DPIIT, and this definition is upgrading year by year. So in future, means within I think 2 to 3 months, this definition will again get revised. कुछ और additional चीजें इसमें हो सकती है या कुछ चीजें subtract भी हो सकते हैं. So the legal definition up till now is कि कंपनी के जो एज है, so what's the company age is, कि कंपनी जब आप रजिस्टर करते हो, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, सोल प्रोप्राइटरशिप, these are the types of the company. So again, this is not our core agenda of the session, that's why I'm not taking these companies into the discussion. But company की जो आपकी age है, it should be less than 10 years. If your company age is less than 10 years, then you can be recognized as a startup. So this is the first parameter. You need to fulfill all the 5 parameters if you want to recognize yourself as a startup. First is a company age criteria. Your company age should not be exceeding the 10 years. Second is a company type must be a private limited company, registered partnership, firm, or a limited liability company, limited liability partnership, which is LLP. So your company type must be from these.
Third thing is the annual turnover. Your annual turnover should not exceed 100 CR. 100 CR के ऊपर आपका annual turnover नहीं रहना चाहिए. Then you can call it yourself as a startup. Fourth thing is a original entity. Original entity is a कि आपकी कंपनी जो टाइप में रजिस्टर्ड है और उसी वही कंपनी पे आप सर्टिफिकेशन ले रहे हो, नॉट इन द सम अनदर ब्रांड इन योर कंपनी. आपकी कंपनी का कोई दूसरा एक ब्रांड है, उस पे आप ले रहे हो डीपीआईटी सर्टिफिकेशन, सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. योर ओरिजिनल एंटिटी मस्ट बी योर कंपनी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमने अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि योर startup idea should be potential, it must be innovative, and it can be scalable. So this is the latest definition of a startups announced by the DPIIT, which is a government department. Now हमने काफी सारी चीजें अभी तक डिस्कस कर ली कि हाउ स्टार्टअप कैन सक्सीड, और काफी सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स के भी हमने एग्जांपल ले लिया. बट वी मस्ट नो क्यों स्टार्टअप फेल हो सकता है. एक स्टार्टअप जो है, व्हाट थिंग्स ही और शी नीड टू कीप इन माइंड सो दैट उनका स्टार्टअप फेल नहीं होगा. सो व्हाई स्टार्टअप्स फेल, उसके कुछ रीजंस है, उसके कुछ प्रोमिनेंट रीजंस है. मैंने काफी रीजंस उसमें है, बट आई हैव चूजन सम फ्यू ऑफ देम. Hello. Yes. Sorry for the interruption. Yeah. So we were discussing about the. We'll take the slide quickly now. That why startup fails. So if you have not identified a right market need, if there is no market need for your product, like I have given the example of the drone startup, that they want to keep agar fire ki situation hai to that person will that drone will go to that fiery uh, region, and then that drone will pick up the people from that region. So it is not a market need right now. There are the solutions, and these cannot be the solution. So if agar market need hi nahi hai, then your startup may fail. Aapka business model poor hai. Business model is what I'll discuss in the further slide, so then you will get the clear idea of it. Operational challenges hai, means jo bhi aap solution you are thinking about. So let's say you have think about a startup who will give the sustainable products, like eco-friendly products ही आपकी साइट देगी. ऐसा अपने एक स्टार्टअप एस्टैब्लिश करने के बारे में यू आर थिंकिंग अबाउट इट. सो उसमें आपको लॉजिस्टिक आपका सेटअप नहीं हो रहा है, या फिर पैकेजिंग में आपको दिक्कतें आ रही है, आपका जो पेमेंट गेटवे है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है. सो दीज आर द ऑपरेशनल चैलेंजेस. और अगर ऑपरेशनल चैलेंजेस इज फंक्शनिंग करने में ही आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, देन योर स्टार्टअप में फेल. लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज. सो लेटेस्ट इशू इज बाय पेटीएम, जो पेटीएम के बारे में आपने सुना होगा. सो दे हैव फेल्ड टू कंप्लाई देयर रेगुलर कंप्लायंसेस. उन्होंने मिस आउट कर दिया, उन्होंने वो फील नहीं किया. सो दैट्स व्हाई देयर आर द लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज. अगर आपके स्टार्टअप में है तब भी आपका स्टार्टअप फेल हो सकता है. प्रोडक्ट प्रॉब्लम, जैसे आपके प्रोडक्ट के लिए एक्सेप्टेंस ही नहीं है मार्केट में, नहीं चाहिए मार्केट को वो प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट में ही आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रोडक्ट में ही आपकी इश्यूज है, तब भी आपका स्टार्टअप फेल हो सकता है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टीम इश्यूज. अगर आपकी टीम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, आपकी टीम में आपने सारे ले लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स, और देयर इज नो पर्सन टू हैंडल द टेक वाला पार्ट, हैंडल द बिजनेस, हाउ द बिजनेस विल ग्रो, वो भी आपके पास नहीं है. अगर आपकी टीम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. सो क्विकली आई विल जस्ट टेल यू कि अगर आप आपके स्टार्टअप के लिए टीम बिल्ड कर रहे हो, यू मस्ट हैव अ पर्सन
from a business background, that he must understand the business कि कैसे business को run किया जाए. Technical person भी होना चाहिए. आपके पास product development के लिए भी होना चाहिए. So your team should be complementary. एक ही type के सब लोग आपके team में है, then this strategy will not at all going to work. So these can be the reason of the startup failure. How to prepare a pitch deck? So what is pitch deck? If you are going to pitch to any incubation center or any funding agency to give you the funds, or to the incubation center to provide you the incubation support, then they'll ask you to share your pitch deck. So pitch deck is what? The things related to your startup, all the things like problem statement, what problem you are solving, what product you are giving, and there are the multiple essentials for the pitch deck. So वो सारी चीजें मेंशन करके आप जो एक प्रेजेंटेशन बनाते हो, वी कैन कॉल इट एज अ पिच डेक. तो स्टार्टअप को उसकी आइडिया पिच करने के लिए जो भी प्रेजेंटेशन होता है, इट इज नोन एज अ पिच डेक. सो पिच डेक कैसे प्रिपेयर करते हैं? देयर आर द pointers I have mentioned for the preparing the pitch deck. So first is the problem statement. Which problem you are solving, you need to mention about that. Your product and service, आपके product और service के बारे में अपने detail में उसमें लिखना चाहिए. Business model, there is a one slide in which I have mentioned about business model canvas. So we'll discuss this in the upcoming slide. Financials, your financial details, like in which at what cost you have manufactured. So there are the various parameters of these financials also. We can conduct a separate lecture on this, that how to deal with the financial parameters while pitching the pitch deck or while preparing the pitch deck. Competition analysis is the thing कि आपके competition में वैसे कौन से लोग हैं, वैसे कौन से what I can say, competition में आपके कौन से brands है. Like if you are a biscuit manufacturer, then Monaco is your competitor, Marigold is your competitor, Parle is your competitor. So आपके जैसे ही product manufacture करने वाले कौन है, we can call it as a competition analysis. And market size, market उसका कितना है, जैसे हम सुनते हैं कि इतने बिलियन का मार्केट है, ट्रिलियन बिलियन का मार्केट है. So this is a market size. आपकी market size क्या है वो भी आपको मेंशन करना होता है आपके पिच डेक में, while pitching your startup idea to incubator or investor fundraiser, to whomsoever. Revenue model, so how you can earn the revenue, it is also one of the parameter to prepare your pitch deck. So here I have taken one case study of the Zomato. कि Zomato का model आपको right now we don't have the ample amount of time, that's why I'm taking this in very faster way. But again, there can be a session on this business model also, कि how to prepare a business model. This is the base of the every startup. If you are clear with your business model, then only you can proceed ahead or project a successful startup to the society. So Zomato का business model क्या है? We'll just quickly understand it. Value proposition. So value proposition is the simplest thing कि क्यों खरीदे कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट, क्यों खरीदे. The reasons are mentioned here. You guys can take a screenshot of it and read it in detail. So I'm just quickly moving the slide. Value proposition is a कि प्रोडक्ट जो है, कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों ले. The reasons to the customer to buy your product is known as a value proposition. Cost structure. So cost structure is what technology setup is needed, what the salaries of employees and delivery guys are involved, and all the things. So which are the expenditures for a startup is known as a cost structure. Revenue streams. So revenue streams is कहाँ से आपको revenue generate होगा, it is a revenue stream. Key partners, who is going to be with you in this, like you can say vendor or the persons who are connecting these dots of your business. So in the case of Zomato, restaurants and delivery persons are the key partners. Channels, through which channel you are reaching to your customer. Customer segment is कि कौन है आपके customer segment, who is looking for this. So customer segment is that. Key activities, what the things your startup is going to perform is a key activities. Key resources, so key resources is कहाँ से आपको database generate होगा और कहाँ से आप अपने customers को reach out करोगे. It is a key resources. And yes, I have we have I think 3 to 5 minutes more to discuss
any questions you guys are having. Yeah. So No. okay. Okay, so thank you, team MMIT, for giving me the opportunity to deliver the session. You can have a closing remarks from your side, and we can end the session. Thank you. Hello. Yes. Is it audible? Yes, you are. Okay. So myself, Dr. Mangesh Saumke. On behalf of Marathwada Mitra Mandal Institute of Technology, Department of Computer Engineering, I especially thanks to Engineer Ketki Tupe Madam for her valuable guidance on this particular topic of innovation into startup or ideas into startup. So her valuable guidance to our students definitely make some output of that particular session, and I'm very much thankful to Department of Computer Engineering for such a valuable session on innovation and startup. So may I request to all that the session is end. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.